Did you like this small introduction to this bike? So welcome back to the channel guys. My name is Vishu and today we are reviewing the Polygon Heist X7, which is the top of the line bike in Heist series from Polygon Bikes. So last week we reviewed Polygon Heist X5 and today we are reviewing the Polygon Heist X7. So और कोई बाइक भी है क्या इनके हाई सीरीज में? आई थिंक नहीं, एक शायद हाइस्ट X2 की सीरीज है जो कि हमने बहुत पहले रिव्यू किया था. सो आई बिलीव हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाइस्ट की जितनी भी सीरीज है वो सारी कंप्लीट कर ली है. सो लेट्स बिगिन दिस रिव्यू बाय सीइंग व्हाट ऑल कंपोनेंट्स वी गेट ऑन पॉलीगन हाइस्ट X7 2021 edition. So the Polygon Heist X7 comes with AL6 Urban Cross frame. It's a through axle frame. At the back we are getting through axle, as well as this bike has internal cable routing to manage your cables neatly. On the cockpit we are getting NTT Expert alloy handlebar on this bike. It's a flat handlebar with NTT Expert alloy stem. On the handlebar we are getting Shimano MT401 brake levers. Yes, this bike is giving you Shimano MT401 series braking. Along with that we are getting the Shimano SLX 11 speed shifter, as well as we are getting the rubber ergonomic grips on this bike. On the front we are getting SR Suntour NVX air suspension fork with 63 mm of travel. This fork features a lockout as well as air chamber to provide you stability. This fork comes with through axle. We are getting 700C double walled alloy wheel set on this bike with WTB Riddler tire on this bike. These tires are both urban as well as for gravel oriented riding. So you can definitely ride this bike on city as well as on gravel path very easily. Now let's talk about the drivetrain, which is the most exciting part of this bike, is that this bike is coming with 1/11 group set. Yes, this bike is giving you 1/11 speed group set. On the front we are getting a Holotech alloy crankset. At the back we are getting 11 speed cassette by Sunrays. It's a 1146 teeth range, which is really massive and looks really nice. And along with the cassette we are getting the 11 speed Shimano SLX rear derailleur. This is the latest series of Shimano SLX rear derailleur, which looks really nice and overall improves the shifting capabilities. And if we talk about the braking, so braking is provided by Shimano MT401 brake levers and Shimano MT410 brake calipers with 160 mm of disc brake rotor, which are center locked by Shimano. Plastic pedals are standard on this bike. I felt a little bit excited as well as a little sad when I saw the drivetrain. I mean, this is something next level. हमारे इंडिया में MTVs में Dior नहीं मिलता है, SLX तो दूर की बात है, और यहाँ पे हाइब्रिड बाइक में Polygon SLX दे रही है. बताओ यार, उनकी सोच किस लेवल तक जा रही है. So let's see how this bike performs during the riding. So during the testing, when I started riding this bike, I almost went for 50 kilometers ride and I felt the bike is pretty comfortable, considering this bike has this similar geometry as Heist X5 जो मैंने पहले भी राइड की थी. तो Heist X7 का भी जो ओवरऑल राइडिंग का कंफर्ट है वो काफी अच्छा आता है. It's a flat alloy handlebar with enough length to give you good control as well as stability जब आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग या फिर अगर आप अर्बन क्रॉस के लिए भी राइड करने के लिए जाते हो तो वहां पे ये जो ओवरऑल बाइक का डिजाइन है, जो हैंडलबार है, जो ओवरऑल बाइक है, ये काफी कंफर्टेबल आपको फील करवा सकती है. बिकॉज मेरे को वो कंफर्ट काफी अच्छा फील हुआ है. द सैडल दैट वी गेट ऑन दिस बाइक हैज गुड कुशनिंग, सो इट गिव्स यू गुड कंफर्ट व्हेन यू सिट ऑन दिस बाइक एंड राइड इट. एंड दिस टाइम आई सॉ दैट हाइस्ट X7 में आपको एक लेंदी स्टेम मिलता है, जिसके वजह से जो थोड़ी सी रीच है आपकी वो भी अच्छी खासी बन जाती है जब आप नॉर्मल कम्यूट करते हो, एज वेल एज जब आप स्प्रिंट भी करना चाहते हो या थोड़ा सा फास्ट राइड करना चाहते हो अपनी बाइक को, तो उसके लिए भी आपको स्टेम एंड हैंडल बार के वजह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है. एंड सिंस दिस बाइक हैज अ 1x ड्राइव ट्रेन, तो ऑब्वियसली आपको फ्रंट के गियर्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड एट द बैक वी हैव इनफ गियरिंग रेशियोज जो हमारे डेली सिटी स्पेसिफिक राइड्स के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हमको प्रोवाइड कर देती है. एंड इन टर्म्स ऑफ द राइडिंग एंड कंसिडरिंग इट हैज 700C व्हील सेट्स विद WTB Riddler टायर्स, जो कि हमको सिमिलरली X5 में भी सेम ही मिलता है. तो टायर का जो ओवरऑल रोलिंग एंड जो कंफर्ट है वो काफी अच्छा है. ग्रिपिंग इज रियली नाइस, काफी लेस रेजिस्टेंस ये क्रिएट करती है ड्यू टू द माइक्रो ब्लॉक्स जो इस टायर में हमको मिलता है. एंड व्हेन यू गो फॉर कॉर्नरिंग, तो टायर के कॉर्नर में दे हैव गुड स्मॉल बीड्स एंड नॉब्स जो आपको ओवरऑल कंफर्ट एज वेल एज ग्रिप प्रोवाइड करते हैं.
And in terms of shifting capabilities, since this bike has the latest Shimano SLX, तो obviously जो shifting capabilities and जो performance है drive train का, that is quite improved and काफी अच्छा gearing ratios आपको overall मिल जाता है. Shifting is crisp, आप चाहे climb करना चाहो या downhill पे fast ride करना चाहो, shifting एकदम accurate ही मेरे को during the testing मिली थी. So during the testing, shifting was smooth, precise and accurate whenever I shifted the gears. Braking definitely improved from the Heist X5 or maybe Heist X2 series because we are getting the Shimano MT410 brake levers and Shimano MT410 brake calipers. तो obviously Shimano MT200 series के मुकाबले 400 series का जो braking power है वो काफी अच्छा है. They give you solid punch when you push the lever and जो levers हैं they are also nicely built, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज कम्पेयर टू MT201 जिसमें फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है. MT400 में आई फेल्ट की हल्के से स्लाइट टच से ही जो ब्रेकिंग है वो काफी अच्छे तरीके से मुझको मिल रही थी. सो आई फील दिस काइंड ऑफ ब्रेकिंग इज रियली गुड व्हेन यू गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट और टूरिंग राइड बिकॉज आपको एक स्लाइट पुश से ही आपका जो ब्रेकिंग है वो पूरा परफॉर्मेंस आपको अच्छे तरीके से देगा. एंड वी गेट 160 mm डिस्क ब्रेक रोटर ऑन दिस बाइक बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी डाउनहिल राइडिंग और माउंटेन बाइकिंग राइडिंग जो एक माउंटेन बाइक्स में हम लोगों को करते हैं विच वी नीड बिगर रोटर्स. सो 160 mm इज मोर देन इनफ फॉर सच अर्बन क्रॉस राइडिंग इन दिस बाइक. So overall my riding and commuting experience with this bike has been really good. The bike is comfortable as well as fast and provides you with enough gearing ratios which you need for urban riding as well as for gravel oriented riding. In terms of con, well this bike has the similar cons which we have experienced in Heist X5, that the WTB Riddler tire that we get on this bike is too soft for our Indian roads because अपने इंडिया में वैसे भी इधर उधर बहुत ज़्यादा डेब्री एंड जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो गिरे ही रहते हैं. तो इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग गुड टायर प्रेशर देर आर चांसेस कि जो टायर है उसमें थोड़ा सा कट लग सकता है एंड इट में रिजल्ट इन टू पंक्चर्स. एंड सेकेंड थिंग दैट वी गेट द प्लास्टिक पेडल, सो आई वुड रियली रिकमेंड Polygon since this is the highest series of Heist X5. I would really like to see it with alloy pedals. Now the pricing, at the current this bike is costing around 81,000 rupees in India. The reason I don't speak about pricing nowadays is because market is constantly changing. जितनी भी बाइक्स बाहर से हमारे इंडिया में आ रही है उनका जो प्राइस है वो कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो काफी कम हो जाता है, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ टैक्सेस जो उस बाइक के ऊपर लगाई जा रही है. इन केस यू नीड पर्सनल बाइक रिकमेंडेशन फॉर योरसेल्फ यू कैन बाय मी अ कॉफी एंड मैं पर्सनली हेल्प करूंगा आपके लिए एक बेस्ट बाइक चूज करने में. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल @cycleriderroy. Do you want to see Heist X5 review? Here is a video. Make sure you subscribe this channel and साथ ही जो all notification है उसको ऑन करके रखना. So I'll see you with another video. Until then, bye bye.